Welcome to the very first podcast of Topic, ma'am. Thank you for accepting our invitation. Ma'am, I would like to request कि आप अपने बारे में and आपके experiences with students and interviews and placements के बारे में थोड़ा बता देंगे. So thank you for giving me this opportunity. Thank you. And I joined Shankaracharya in 2001, and it has been almost 21 years for me in this college. And I am active in academics, take classes. Apart from this, I'm also involved in training and placement activities as a corporate relation officer. And this role was entrusted upon me in the last 5 years, and I hope I'm doing my job well. As far as my interaction with students are concerned, in academics, I feel that today the students are getting a lot of opportunities, to learn things, not just from library or teachers or books, but also internet. Initially, students were used to struggle a lot. I mean, the students who were not or did not have access to libraries were little, left out. But thankfully, to the new trends and the technologies, students are now, they are exposed to various ways through which they can gain knowledge. My experience of students with respect to placement, well, I get to meet a lot of eager students who are very, very much interested in placements. But at the same time, I also get students who are not interested in placements, who come to college just to pass their time. But yes, those who are interested, my experience has been very good. I have come across some very brilliant minds. I've come across some very disciplined students and some very bright minds. So overall, it has been a very, very nice experience. And I'm loving what I'm doing. Initially, I thought I won't be able to handle this kind of job, but yes, now I'm much comfortable, and I love to do what I'm doing. Thank you. Thank you. Ma'am, I want to ask कि अभी सब classes online हो रही है. Now you find that eager students who want to learn something new. Now you find students like that now. If I've interpreted it right, do you want to ask me whether online teaching has changed the scenario? Yes, it has. I have been teaching for last 25, 26 years, and yes, the online teaching was not very easy. As a student, I think it was not very easy to understand or participate in the lecture sessions, and as a faculty also it was a challenge for us, because the way we interact with students, the richness of information is much more when we interact face to face. But when it is online, most of the time we are able to see just names the students have. They don't on their videos, and if you can't interact and see their faces, it becomes very difficult to teach. So yes, that was a challenge. And I believe there was a lack of enthusiasm in students. Initially it was there. But then, since so much of information was available through webinars, seminars, classes, online classes, virtual sessions, that after some time, I found that the students had, they had lost interest. But thankfully, the situation has changed, and now we are back to physical classrooms. But I think that, these 2 years have taught us a lot of things, and this blended mode of teaching will continue. And I believe that is good also, because you get to learn from people who were not accessible before. They made easier on me. Thank you.
now in this podcast, we are talking about interviews. So at this point of time, uh, placement season is going on. Many students are applying for that, and some students apply next year. जैसे कि हम लोग भी apply करने वाले हैं next year. So how can we impress the interviewer? I don't think you need to impress the interviewer. You have to be true to yourself. That is my take on things. Yes, the placement season has started, and in last 20-25 days, we have been able to host around 10 to 12 companies, and our 150 students have either got internships which happens our jobs, and we still have many more lined up. So my advice to the students who are appearing now, as well as for the students who would be appearing next year, would be that try to gain as much as possible the subject knowledge. It's very important. Whether it is, even if it is a non-technical job, it requires certain skills. So even if it is sales, it is not that sales job is easy. I think it is very difficult to convince somebody to buy something. It is not an easy job. So even if it is a non-technical job, you require certain skills. If it is a technical job, we all know that it requires reasonable amount of skills. So my advice would be that right from second year onwards, one should start preparing for technical skills. Apart from technical skills, you also need to develop communication skills. Recently, Cognizant has come up with a new test called communication test, because they believe that even if the problems they faced was that students were not able to communicate with the clients, and since we are in an era wherein the clients can be from any place, we mostly talk about multinational companies, so the clients can be from any part of the world, and we need to communicate with them in English, at least if not very good English, but at least we should be able to understand what they are trying to say and what we want to say. So that basic communication is expected from all the students. So you have to work on your communication skills. You have to work on your technical knowledge or subject knowledge. And apart from this, you need to understand the importance of body language. So that also is important. Then etiquettes, simple, basic etiquettes is also a must. And a smile on the face is very important. You win the battle with a smile. So I personally feel that when you enter, the first impression which you make is how you enter and how confident your walk is till you reach your chair. So that is what I have to say. I want to ask, you have mentioned communication skills. How can a student improve that if he is weak in that? See, I think if you put your mind into anything, you can achieve anything and everything. It's important that you understand what your weakness is and work towards it. So, if a person is weak in communication skill, I would suggest that please take help of your friends, your family, whoever is comfortable in speaking in English, and do not hesitate, to take help from people and practice. That is a must. If you don't have an audience, your mirror can become your audience. You yourself basically can become your audience, and you need to speak continuously for at least 4 to 5 minutes, not just one line or two line and then stop. Try, and I'm pretty sure that
once you start practicing, your quest to learn new words will increase. Then I would suggest to students to go through e-papers. And if you come across a word which you are not aware of or you are not comfortable with, please refer to the dictionary. At least you will learn a new word every day. And when I say read paper, I don't ask my students to read everything. I would suggest them read what you like. If you like to read about sports, read that. If it is politics which interests you, go through it. It's not necessary that you read a particular section of the paper. It's important that you read something which is written in English and you are able to understand each and every word which is written there. So if you keep on doing that, so they say that to form a habit, you have to work on it for at least 21 days. So if you are able to cross that bridge, I think nothing will be impossible. Ma'am, there is another point, body language. So, उसमें क्या-क्या होते हैं? There are a number of things, like when somebody is talking to you, and eye contact is very important. That is the first and the foremost thing. The second thing which I would say is like how you sit and communicate. Like some people, when they are nervous, they start drumming on the table, or they start clasping their hands. So that shows nervousness. So you basically try to, even if you are nervous, I know which is like very natural, and you have butterflies in the stomach. So basically what I would suggest is clasp your hand. Even if you want to clasp your hand, put it inside, beneath the table, and then hold it, rather than putting on the table and then fidgeting. So fidgeting is another thing which you must not do. Adjusting, putting your hands on the collar, that kind of thing should be avoided. Then sitting like this would not work, because this indicates that you are not open to practice. You are a closed person. So I would suggest this kind of language, this kind of body language should not be there. And if you feel that you need some time, you can always ask the person that, sir, I would require a few minutes for this. Rather than going on saying and using hums. It would be better that you take your time. You say, can I get a minute, sir? And think about it and then answer. So there are few things. Not lot of body language would be required when you are sitting and giving an interview, while a lot of things are required when you give a presentation. But here, when we're talking about interviews, I would say that there are very few basic things which you must keep in. Eye contact, a smile on your face, do not fidget, and do not show, I know you are nervous, but try not to show it. Clasp your hands if you at all you feel that nervous. I just done this. Please pardon me, everyone. Ma'am, this is very interesting for my team too. Does extracurricular activities make some impact on the interview? Yes, it does. And how I'll tell you, basically any extracurricular activity, whether it is singing, dancing, debating, or painting, anything for that matter, sports, everything needs discipline. Every particular activity requires hard work, right? Teamwork. If you are in sports, it would require a teamwork, right? So when you say that you are involved in certain activity as an extracurricular activity or as an hobby, it gives a message to the interviewer about you. Whether you are, somebody says, I am good in singing. Singing needs a lot of practice, a lot of discipline, right? You
you must have heard the singers that they have to abstain from drinking or drinking cold stuff or eating cold stuff. So it requires a lot of discipline. So it gives the message to the interviewer that yes, you are a disciplined person. There are certain activities wherein you will require communication skills. For example, debate. So you say that I am involved in debate, then it gives a message that you must be good in communication and hence this particular activity. So every activity which you say as your expertise, as you are like it's your hobby or you are good at it, it will give a message to the interviewer about certain skill which that particular activity requires. So it's always good to think about what you like and what you like to do the best, and always and tell about that. We should never fake about it, right? Yes, you should never fake about it, because there are n number of instances which I have come across where a student has said that, oh, I like reading, and then they say, oh, you like reading, which kind of book do you like, and then which genre books you like, and then if you say, oh, I like science fiction or I like something like that, then they'll say, what is your favorite book in that particular section? And I remember a guy who said, oh, I like to read Godfather, and he said, okay, so who was the writer? And it's Mario Puzo. Then can you tell me something about a certain character he made from the book? And can you give me a character sketch of that person? And of course, how long can you fake it until and unless you have read that, right? So then there was another instance wherein somebody said, I love to play lawn tennis. And he said, oh, how long have you been playing? He said, around 8 to 9 years. And he said, okay, so when you are holding that, shuttle Racket. or the racket, sorry. So what is the diameter? What is the weight of the racket, and what is the advisable, weight of that racket? So if you like something, you will try to find about these things. If you don't like it and you are faking things, then you will try to find out superficial things about it. That's it. You won't go deep into it. So that's how things work. So please ensure that whatever you say, you know about it. So even if you say I like cooking, then start asking what kind of cuisine do you make? So if you say Italian, I say Chinese, or then they'll say what is the most important ingredient which is used in that particular style of cooking or that particular cuisine. So again, you cannot fake it for long. So ensure that whatever you say, you know about it. That's it. And if you don't have it, something you say, I don't have it. That's it. So guys, don't fake it, right? आज हम लोग के पास कुछ कॉमनली पूछा गया इंटरव्यू क्वेश्चंस है जो कि मैम बताने वाली कैसे अप्रोच करना है। मैम पहला क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। See, when we say tell me about yourself, I would suggest कि बच्चों को जो कंपनीज जब भी रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन भेजती है। सो व्हेन जॉब डिस्क्रिप्शन के में लिखा रहता है कि इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन सी स्किल्स चाहिए, सो वन उसको पढ़ के जाना। सो व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि then they say tell me about yourself, try to say what skills you have by mapping the skills with the job description. जो जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल्स लिखा है और जो स्किल्स आप कह सकते हो कि हाँ यहाँ पर वो स्किल्स बताने से फायदा मिलेगा, आप अपने बारे में वो स्किल्स और सबसे पहले अपने करंट सिनेरियो को बताएं। उसके बाद अगर एक्सपीरियंस्ड है या कोई इंटर्नशिप किए हैं या कोई मेजर एकेडमिक आप लोगों ने कुछ कंपटीशन जीता है या कुछ अकम्पलिशमेंट है तो उसके बारे में, एंड देन यू कैन धीरे से आप शायद अपने स्ट्रेंथ्स
अपने वीकनेसेस, उसके बाद आखिरी में आप अपनी फैमिली के बारे में 1 या 2 लाइन डाल सकते हैं। जनरली स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती हैं, मेरे इतने भाई बहन हैं, मैं इस स्कूल से पढ़ा, मैं इस कॉलेज से पढ़ा। ये इसलिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये आपके रिज्यूमे में लिखा रहता है। तो वो चीज मत बताएं जो कि लिखा हुआ है। ट्राई करें ऐसी चीजों को बताने की जिसमें आप उनका इंटरेस्ट खींचना चाहते हैं। यू वांट देम टू टेक नोटिस ऑफ दोज थिंग्स अबाउट यू। तो हमेशा कोशिश करें अपने करंट सिनेरियो के बारे में पहले बताएं, करंट स्किल्स आपने जो किए हैं या अकम्प्लिशमेंट्स है उसके बारे में बोलें, और उसके बाद आप धीरे धीरे यू कैन गो बैक एंड लास्टली यू कैन ऐड योर बायोडेटा, दैट इज योर पेरेंट्स, योर siblings. The second question is, what are your future goals and where you want to see yourself in the next 5 years? So लोग बहुत ज़्यादा confused है इस question में। See, basically ये question वो इसलिए जानना चाहते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि आपको अपने पे कितना कॉन्फिडेंस है और आपने अपने लिए कोई सोच बना के रखी है या नहीं, कोई विजन रखा है या नहीं रखा है। तो नॉर्मली वो ये क्वेश्चन जब आपसे पूछते हैं तो एक प्रोबेबल आंसर मैं कह सकती हूँ, वो ये होता है कि मैं किसी हाई पोजीशन पे अपने आप को देखती हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ वहां पर वैल्यू एडिशन करते हुए देखना चाहती हूँ, नॉट जस्ट एज अ टीम बट एज एन इंडिविजुअल टू। हम टीम वर्क करते हैं, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क ही होता है, बट एक पॉइंट के बाद आप शायद इंडिविजुअली इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हो कि आप टीम में अलग से भी नजर आने लगे। तो मैं वो पोजीशन चाहती हूँ, राइट। तो इससे ये समझ में आता है कि मेरे दिमाग में अपने लिए आगे बढ़ने की सोच है। आई जस्ट डोंट वांट कि सेटल कि अच्छा जॉब मिल गया बस मेरा काम खत्म है ना, मुझे पैसे मिलने लगेंगे बस मेरा काम यहाँ खत्म, जॉब बोला था मिल गया, ऐसा नहीं। तो हम 5 साल एक बड़ा पीरियड होता है वेरिन मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं अपने आप को नई टेक्नोलॉजीज में अडैप्ट होते देखना चाहती हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं किसी हायर पोजीशन पे देखना चाहती हूँ अपने आप को और कंट्रीब्यूट करते देखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से देखते हैं, कैसे आंसर नहीं करना चाहिए। कैसे आंसर नहीं करना चाहिए, जनरली हाउ डू यू सी योरसेल्फ तो वर्किंग। अब आप मान लीजिए, मैं सपोज करिए आप एक एक्स कंपनी से आए हैं और आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 5 साल में मैं अपने आप को गूगल में देखना चाहती हूँ या अमेजन में देखना चाहती हूँ। दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड। अभी जो कंपनी आपके सामने बैठी है आपको उसी को स्कोप मान के चलना है, क्योंकि आप सामने वाले को इंटरव्यू दे रहे हो जो कि जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी के लिए। तो ऑब्वियसली हमारे आंसर्स उसी स्कोप में, उसी दायरे में होंगे। आई वोंट से कि अच्छा ठीक है फॉर द स्टार्टर्स मैं आपकी कंपनी में हूँ लेकिन 5 साल के बाद मैं अपने आप को बिग 4 में देखना चाहती हूँ या बिग 5 में देखना चाहती हूँ। दिस इज नॉट द वे यू शुड आंसर। थर्ड क्वेश्चन इज टेल अस योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो इसमें हमें किस में ज़्यादा फोकस करना चाहिए? स्ट्रेंथ्स। और स्ट्रेंथ्स निकालने के लिए यू मस्ट डू स्वॉट एनालिसिस, इट इज अ मस्ट। एंड आई सजेस्ट कि जितनी जल्दी आप वो करना शुरू कर दें, शायद 11th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर, आप एक स्वॉट एनालिसिस जरूर करें। एंड स्वॉट एनालिसिस बेसिकली S stands for strength, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. So you have to basically एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है आपको, जहाँ पर आप एक जगह स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं और दूसरी जगह आप अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स लिखते हैं। इसमें जो पहला भाग है मैट्रिक्स का, जहाँ पर आप स्ट्रेंथ और वीकनेस रहते हैं, वो आपकी मुट्ठी में होता है, और जो दूसरे साइड
अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स वो एनवायरमेंट में होता है जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो जो आप कंट्रोल कर सकते हैं इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड यू नीड टू रेट्रोस्पेक्ट। आपको आत्मचिंतन करना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि मेरे क्या स्ट्रेंथ्स हैं और मेरे क्या वीकनेसेस हैं। अनटिल एंड अनलेस आप खुद ना निकाल पाओगे। कहीं ऐसा ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नेट पे गए, नेट से निकाल के डालते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट। मुझे मालूम है मेरा क्या स्ट्रेंथ है। हो सकता है अच्छा वाक्पटुता, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल इज माय फोर्टे, ठीक, जो कि एक्स के लिए नहीं होगा, शायद उसके लिए टेक्निकल स्किल्स उसका फोर्टे। सो आइडेंटिफाई करिए, खुद सोचिए मेरे में क्या अच्छा और उसको लिखिए एंड देन आपको अगेन मालूम है आपकी वीकनेसेस क्या है, उसको वीकनेसेस में डालिए। और मैं इसलिए ये कहती हूँ कि आप पहले से शुरुआत करें क्योंकि जब तक आप एलिजिबल हो जाते हैं इंटरव्यूज देने के लिए, आपके पास अगर आप 12th से स्टार्ट करेंगे ये स्वॉट एनालिसिस करना या फर्स्ट ईयर से कर रहे हैं तो आपके पास 3 या 4 साल टाइम रहता है अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ के खाने में क्या बॉक्स में ले जाने के। सो यू हैव टू वंस यू आइडेंटिफाई, जब मुझे लगता है, जैसे मुझे लगता है मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, अगर मैं फर्स्ट ईयर में ये बोलती हूँ तो ठीक, लेकिन अगर मैं फाइनल ईयर में भी आकर यही कहती हूँ कि इंग्लिश नहीं बोल पा रही, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ये 3 या 4 साल में अपने वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाने की कोशिश की। सो आपको आइडेंटिफाई करना है अपने स्ट्रेंथ्स, अपने वीकनेसेस, और कोशिश करना है अपने वीकनेसेस को अपने स्ट्रेंथ की तरफ मूव करना। नाउ हर इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं होता, हर एक में पॉजिटिव्स है, हर एक में नेगेटिव्स है, हर एक के पास स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है तो ऑफ कोर्स जो आपका बेस्ट है वो पुट अप करिए, क्योंकि हम सामने वाले को अपना बेस्ट ही दिखाने की कोशिश करते हैं। सो आप अपना बेस्ट, आपको जो सबसे अच्छा लगता है आप वो दिखाएं। वीकनेसेस भी बताएं, बट कोशिश करें वीकनेसेस ऐसे वीकनेसेस बताएं जो सामने वाले को स्ट्रेंथ लगे। जैसे कि मैं कहूँ कि मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, राइट। तो अगर परफेक्शनिस्ट बोलते हैं इसका मतलब क्या कि हर काम को जब तक हम अच्छे से नहीं कर लेते तब तक हम सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते, एंड कोई भी काम परफेक्शन से करने में टाइम लगता है। सो इट इज पॉसिबल कि मैं टाइम, जो कि एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, उसको शायद प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं अपने आप को आप परफेक्शनिस्ट बोल रहे हैं, राइट। दूसरी चीज मैं बोल सकती हूँ कि मैं दूसरों को मैं किसी काम के लिए ना नहीं बोल पाती। आई कांट से नो टू थिंग्स। उससे क्या होगा, प्रेशर मेरे ऊपर आ जाता है। सो अननेसेसरी प्रेशर लेकर अपने आप को स्ट्रेस कर। सो दैट इज अनदर थिंग व्हिच आई कैन से। और आई कैन से कि मैं काम डेलीगेट नहीं, आई एम शाई पर्सन। तो अगर मुझे कोई काम आता है और मुझे मालूम है कि मैं शायद अकेले नहीं भी कर पाऊंगी तो भी मैं डेलीगेट नहीं कर पाती हूँ काम। मैं किसी को बोल नहीं पाती हूँ कि मुझे मदद करो, आई कांट आस्क फॉर हेल्प। सो अगेन दिस इज अ नेगेटिव, बट इट इज नॉट ऐसा वीकनेस विच इज गोइंग टू हैम्पर माई जॉब। तो आप वीकनेसेस बताएं, लेकिन वीकनेसेस को इस तरीके से प्रोजेक्ट करें कि वो एक्चुअली वीकनेस सामने वाले को ना दिखे। क्योंकि आप बोलते हो परफेक्शनिस्ट, आप वीकनेस की तरह प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाला बोलेगा अच्छे से काम करना कैसे वीकनेस हो सकता है ना। नहीं बोलना, सबको यही चाहता है कि अगर आपको कोई काम दे तो आप सीधा बोलो हाँ हम करेंगे। तो अगेन दिस इज नॉट अ वीकनेस, बट ऑब्वियसली जो लोग नहीं बोल पाते हैं उनके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाता है। तो वीकनेसेस बताएं, लेकिन उसको स्ट्रेंथ की तरह दिखे, इस तरीके से कोशिश करें बोलते वक्त। हम अब सबसे ज़्यादा कंफ्यूज सवाल, लोग पता नहीं क्या बोले इसमें। What do you want from this job and why should we hire you? What do you want from this job?
इसका आंसर जो स्किल्स मेरे पास हैं वो मौका देना चाहिए इस जॉब को दिखाने का. Simple and straight. The skills which I have acquired, the skills which I have, I should get chance to show that. This is my basic requirement, and I think this is a reasonable requirement, right? तो इससे better answer आप दे दे पाओगे इस job से आपको क्या. Of course, status, पैसा, वो सब तो part of job है. But एक satisfaction के लिए आप ये कह सकते हो कि जो skills मेरे पास है उन skills को वो highlight करने का मौका मिले मुझे. तो and why should I hire you? Again, this is where आपको job description की जरूरत पड़ेगी. Job description में लिखा रहता है कौन से skills चाहिए इस particular job को करने के लिए. So best है अपने उन skills को highlight करिए जो उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. एंड देन राइट फिट, मेरे पास ये क्वालिटी है, या ये स्किल है. और मैंने जहाँ तक देखा है सर कि जो जॉब आप ऑफर कर रहे हैं उनमें इन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. तो मुझे लगता है कि मैं राइट फिट हूँ इस जॉब. No more stress, very simple and sweet answer. So, मैम ऐसे सवाल भी आते हैं जो हमें पता नहीं क्या आंसर है या आउट ऑफ नॉलेज हो हमारे. कई बार ऐसा नहीं, वो अक्सर होगा कि आपसे जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं देते. पहली चीज आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा टाइम लें. यू कैन रिक्वेस्ट कि गिव मी अ मिनट टू थिंक सर, सोचे और कोशिश करें आंसर करने की. बट अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को ठीक से समझने के लिए मुझे कुछ और चीजों की जरूरत है, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क देम. कि कुछ अगर एडिशनल इनपुट्स चाहिए आपको उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जो कि इंटरव्यूअर आपको दे सकता है, यू कैन ऑलवेज आस्क. अगर तभी भी नहीं आता, then it is best to say, sorry, I don't know the answer as of now, but sir, मुझे अगर आप एक विंडो देंगे after my interview is over and when you get free, आप मुझे अगर एक विंडो या 5 मिनट या 2 मिनट भी अगर आप देंगे तो मैं इस आंसर को सोच के ढूंढ के आपको क्लियर करने की कोशिश करूँ. And do not let it go. If you really want to get selected, do not let it go. जब वो कभी भी आपको बाहर निकले देखें, सर कैन यू गिव मी अ मिनट, सर आपने मुझसे वो क्वेश्चन पूछा था, क्या मैं अभी उसको आपको आंसर दे सकता हूँ, उससे बस ये लगेगा कि आपने चीजों को जाने नहीं दिया. आपसे कोई चीज नहीं बनी तो आपने वो जिज्ञासा है जानने की कि वो ऐसा क्या पूछ गए मुझसे कि मुझसे नहीं बना. तो एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया. तो आपका एटीट्यूड नजर आता है कि यू हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड कि अगर आपसे कोई चीज नहीं होगी तो आप कोशिश करेंगे उसको करने, एंड दैट विल पुट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देम. राइट? I totally relate to this answer because मैंने कुछ दिन पहले कैंपस वॉलंटियरिंग किया था. आई हैव सीन सम सीनियर्स की आखिरी तक रुके हुए थे, जिद कर रहे थे, हाँ कर लेंगे. सो दे गॉट सेलेक्टेड टू, इवन दे आर नॉट एबल टू आंसर सम क्वेश्चंस. Exactly, because it is not possible for me to know everything, but my attitude counts. मैं किस तरीके से बिहेव करती हूँ वो बहुत मायने रखता है. और ये जो एचआर्स आते हैं ये प्रॉपरली स्टडी करके आते हैं कैसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या चीजें देखनी है, वो सब उनको पहले से इनपुट्स दिया जाता है और वो तब आते हैं आपके पास. ऐसा नहीं है कि उनको बस बोल दिया जाता है कि आप चले जाएं और इंटरव्यू ले लें और वो आ जाए. इट्स अ प्रॉपर कोर्स व्हिच दे डू. प्रॉपर उनको समझाया जाता है, उनके वर्कशॉप्स होते हैं, एंड देन दे कम एंड दे लुक. Most important thing what they look for is right attitude.
whether you are open to learn or not. And if I get somebody who doesn't know some things but is open to learn, I would love to hire that person. Because अगर उसमें सीखने की चाह है तो जो नहीं आता है वो सीख ले. So that is the right attitude which one must possess. And सामने वाले को वो आपको दिखाना है. Right? Thank you. तो last question, bonus question है. If given a chance, what should we ask the interviewer? What should you ask the interviewer? So अगर ऐसा कभी मौका मिले कि वो बोले आप कुछ पूछना चाहें तो पूछिए. तो जनरल स्टूडेंट्स का रहता है सर मेरे को पैसा कितना मिलेगा, राइट? फॉर अ फ्रेशर दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट. बेस्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर कैसा एनवायरनमेंट, आप इतने साल से वहां काम कर रहे हैं, वो एनवायरनमेंट कैसा है, लर्निंग एनवायरनमेंट है कैसा, मेंटर मेंटी का रिलेशनशिप वैसा आपके यहाँ पर रहेगा, wherein there will be somebody to guide me. That kind of questions can be asked. मुझे लर्न करने का मौका मिलेगा, मुझे कोई गाइड करने के लिए मौका मिलेगा, सर वहाँ का वर्किंग क्लाइमेट कैसा है, सर वर्किंग कल्चर कैसा है, कैसे लोग वहाँ पर क्या है, कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहते हैं किसी का तो सर आप शेयर कर सकते हैं. इस टाइप के क्वेश्चंस पूछिए जिससे आप ये समझ में आए कि you are actually interested in getting into that company. You want to know more about that company. You want to know what is not written on the websites, but can be told by a person who's working there. So these kind of things will be beneficial, when you are given a chance to ask. हम लॉट ऑफ टाइम्स ऐसे होता है कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो फ्रेंडली सवाल पूछने लग जाता है. सो आपको ये सब नहीं करना, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. Yes, you should never forget that सामने वाला आपका दोस्त नहीं है. They are trying to ensure that you are at ease. क्योंकि वो समझते हैं कि आपका वो this is the first time and आप नर्वस हो, तो इट्स अ गुड जेस्चर बाय देम दैट दे विल इंश्योर कि आप कंफर्टेबल हो. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्टेबल में आपका बॉडी लैंग्वेज ये दिखाने लगे कि आप बहुत कंफर्टेबल हो गए. यू शुड नेवर फॉरगेट दैट यू आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू रूम. नेवर एवर फॉरगेट दैट. सो इवन इफ दे आर फ्रेंडली, स्माइल, बट दैट्स इट. नेवर अरे सर कैसे सर, ऐसे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से जवाब देना शुरू करना, वो आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा. थैंक यू मैम. ये आखिरी सवाल था. थैंक यू सो मच. आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे नॉलेज मिली होगी एंड कॉन्फिडेंस मिला होगा. थैंक यू फॉर योर नॉलेज एंड टाइम. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड आई सिंसियरली होप कि अगर मेरे एक्सपीरियंस और जो मैंने कहा अगर उससे स्टूडेंट्स बेनिफिट होते हैं तो इट इज वर्थ द एफर्ट. थैंक यू सो मच. मैम एक लास्ट रिक्वेस्ट है, हम लोग और ऐसे पॉडकास्ट सीरीज लाते रहेंगे. आप टीचर्स को एक मैसेज दीजिए कि हम लोग टीचर्स आए एंड उनके नॉलेज शेयर करें हमारे पॉडकास्ट से. बिल्कुल, आई विल रिक्वेस्ट ऑल टीचर्स to be a part of this, and if students can benefit from your knowledge, it would be great. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for calling.